डियर व्यूअर्स, इस वक्त मैं यहाँ योगलो या ओगलो केबल कार की जगह पर मौजूद हूँ और आप ही मेरे पीछे देख रहे हैं। यहाँ से जो है केबल कार रवाना होगी और तकरीबन 30 मिनट्स की राइड है। तो हम माउंटेन से जो है ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे। मेरे पीछे आप ये लोगों की लाइन देख रहे हैं जो इसमें जाने के लिए वेट कर रही है और इंशाल्लाह इट विल बी फन। तो स्टे ट्यून्ड। Please subscribe my channel, like this video and share it, and please click on the bell icon so you can get the information about new updates. ये आप देख रहे हैं, ये इसमें काफ़ी लाइन लगी हुई इंतज़ार है, बट लाइन इज़ मूविंग एक्चुअली। यहाँ से हम अब अंदर जाएंगे और हम एक केबल कार में राइड करेंगे इंशाल्लाह। हम बैठेंगे, केबल कार है। केबल कार हमारी रवाना हो गई है। ओह बिस्मिल्लाह। स्कूल बहुत अच्छे। बैठने जाऊँ, मेरा खड़ा होना जो है वो डेंजरस है। चलो ये सही है। आप देख रहे हैं, खुश सुभान अल्लाह, इट इज गोइंग ऑल द वे डाउन। ओह माय गॉड, माशाअल्लाह। तकरीबन आधे घंटे की राइड है और आप देख रहे हैं, ओह सुभान अल्लाह। मेरा कैमरा इतना अच्छा नहीं दिखा रहा जितनी आंखें देख सकती हैं। ज़ाहिर है अल्लाह का करम है, अल्लाह ने आंखें क्या चीज़ बनाई है। अगर मंज़र इज़ सो ब्यूटीफुल। ये पूरी शहरी आबादी यहाँ से ऊपर से नज़र आ रही है और ये बुरसा के शहर योगलो में है। ये देख रहे हैं आप, ये जो शहर है वो पूरा नीचे से उसका मंज़र ये देख रहे हैं। बुरसा शहर पूरा यहाँ से नज़र आ रहा है और यहाँ अमेजिंगली ठंड है बहुत, क्योंकि माउंटेन्स के ऊपर है। और जबकि इस्तांबुल में इस वक्त गर्मी है। आज कुछ मौसम बेहतर हुआ है, अदरवाइज़ यूजुअली फॉर लास्ट 1 वीक इट वाज वेरी हॉट, वाज रनिंग अबाउट 90-95 डिग्री, which is really unusual in Turkey. So we are near to the ground now, and our van is waiting down there. Inshallah, we will go to the next stop. So now I am out. Alhamdulillah, that was nice trip. सवीनियर शॉप्स यहाँ पर हैं, लोग ऊपर से फिनिश कर आ रहे हैं। शहद वगैरह सब कुछ अवेलेबल। वेरी स्पेशल कॉफ़ी they cook in the sand, Turkish cow. And I am buying one, even though it's very expensive because of the location, but it's very nice. इस वक्त हम बंसी भाई और तुर्गत की मकबरों के करीब आए हैं। ये एंटीक मार्केट इसके करीब है। सारा एंटीक सामान यहाँ पड़ा हुआ है। Now we are going towards the attraction.
ये जो है ये उस्मानी दौर में ये हमाम था। ये बड़ा अच्छा हमाम था क्या मॉल था इधर। ये अर्तुगरल की बेगमात के शूज़ हैं इधर। ये दिस इज़ जस्ट अ जोक, आई एम नॉट श्योर, बट ये उसी दौर के हिसाब से ही सामान जो है तैयार किया गया है। यहाँ अर्तुगरल वाले सारे ड्रेसेस पड़े हुए हैं। ये उनके सबसे छोटे बच्चे का ड्रेस है मेरे ख्याल में। Look like this. Oh, subhanallah, mashallah. This is beautiful. You can say old, qadim, Osmanian style marble work. Ceramic work. Ceramic work. And in this room, my tiles. Look. Oh. These are the tiles made ceramic tiles, right? Quartz. With mostly like hand carving, or you can say It's carving by needle, like embroidering. Yeah. Look. Anybody need these things, please contact us and Mr. Yunus. Yunus. Just inshallah. Yunus, brother Yunus. Brother Yunus. Not Mr. Yeah, he is near actually this blue masjid and green masjid in Bursa. What's the number? Your number? +90 553 682 2121. All right. Please do visit whenever you come here in Bursa, in Blue Mosque and Green Mosque. Thank you. Assalamu alaikum. Details. Yeah. See the wall? These walls are like 250 years old. This is the original portion of hall. Come. Yeah. Look here. Look inside the wall. Oh. It's older than America. Yes, it's older than America. Subhanallah. And look at that, they have everything. It's also silk scarves. They have a silk hijab. Those are scarf. handmade. Handmade, oh, mashallah. Handmade. That is good one, inshallah. Okay, and see this? They have these shawls. And also like this small sajada. Yeah. Look, small tray mats. Yeah. And plus like this one. This is plain color because some of my brothers, they want the plain colors. Yeah. Like this. And those are the colorful one. Yes. Those are all made in Bursa. MashaAllah. And the price is cheap. Yes. $20. $20. $20. All right, guys. Inshallah, do come here. ये मोहम्मद सुल्तान अहमद पाशा की खबर है। ये यहाँ की ब्लू मस्जिद है। यहाँ पर सुल्तान महमद की कब्र मौजूद है। Almost everything first they made in Bursa. First mosque, first hospital, first madrasa, first Turkish pub, and the first capital. Yeah. So they came to Anatolia 1071 from Malazgirt. They came to Konya
they make Konya capital city. So image like this. Finish, Turkish Republic start, and Ankara became capital city until now. Yeah, this is 250 years old house, Osmanian house here. Look. But normally I don't like that kind of thing shipping, you know, like take many things, ship it. आज का हमारा जो ट्रिप है वो एंड हुआ और now we are going back to Istanbul. So if you like this video, please share it, like and subscribe. Jazakallah khair. Assalamu alaikum. اللهم صل على